welcome everyone. So today I am going to discuss basics of probability. Now, if you see probability question appearing in UPSC, uh, they ask for some understanding. So this is the purpose of this lecture. So once you have understood, basic concepts of probability, I'm sure you would be able to answer uh, questions related to probability and counting in different papers. So let's start. Now, the first thing comes fundamental theorem of counting. Now, what the fundamental theorem of counting says, let's say there is a task, right? Task is like which have 3 steps, A, B, C, D. And let's say, okay, like this, it is there, right? Let's say, suppose you have to move from A to D. Then from A to B, there are 3 steps, 3 ways to go. B to C, there are 2 ways. C to D, there are total 4 ways, right? So, in how many ways a person can go from A to D? That would be 3 into 2 into 4, right? That will be, 24. And if you are not convinced of this, try to, take simple numbers and you will convince yourself. Let's say from A to B, there are 2 ways, right? Let me write little bit bigger. A to B, there are 2 ways. And B to C, there are 3 ways. Now somebody asks, how many ways there are to move from A to C. So you will say, okay, this is way 1, this is way 2. Let's say if you go from A to B through way 1, then 1 way, then from B to C you will have 3 ways, right? This one, and this one. Now suppose you choose way 2, then again you will have 3 ways, right? From B to C. So what the theorem says, the definition of the theorem is this. What it says, fundamental theorem of counting, if a job consists of k separate tasks, these are k separate tasks, different tasks, moving from A to B, C to D, the IA task of which can be done in N1 way. Let's say I take B task can be done in, B to C can be done in 2 ways. That is, I can be 1, 2, 3, then the entire job can be done in N1, N2, N2, into Nk ways, right? This is a fundamental theorem of counting. Even a class 5 child will understand. If you understand this, your very foundation of probability is now ready. Okay. Now, if you see different questions appearing in various, see one thing I would like to help you understand. I went through the question of CSET last 3-4 years, which UPSC has asked. I went through the question of probability, which UPSC has asked in mathematics, statistics optional as well as management optional. There is one good observation. There are some questions which are appearing from mathematics to statistics to management, and even some minute concept are being tested in CSET. And many of you understand this concept. Let's say you are preparing for some optional, let's say sociology. You might like to see related question in other optional subject. So same way, holistically, I want to cover the topic of probability. Now, generally, aspirants are confused. What is ordered, what is unordered way of counting, what is replacement, and without replacement. And if these concepts are clear, then you would be able to tackle any not say every, but again the question which UPSC is asking from probability, that you should be able to tackle. So generally, this is what happens. There are 2 by 2 matrix. We call it without replacement, with replacement, ordered, unordered. See what I'm trying to say. Let's say you are looking for ordered. What is the meaning of ordered? Let's say from a pack of 52 cards, I choose 5 cards. So I have 2 options, whether I can choose them sequentially. First card, then second card, then third card, then fourth card, like that. Or I can choose 5 cards at one, in one go. If I'm choosing one by one sequentially, then it is ordered, right? Or another way of example of ordered is, let's say I choose 3 numbers from 1 to 10, and those numbers are 1, 2, and 3. Now this is one pick. Let's say another pick is 3, 2, 1. So whether you will call these 2 picks different, if you will call these 2 different, because the ordering is different. Here 1 is coming at the first place, here coming.
at the third place 3, so then it is called ordered. If it is in the ordering does not matter, then it is called unordered. So I believe you understand this concept, ordered and unordered. Now we will talk about the without replacement and with replacement. This I think is very simple. Let's say you from the card of 52 cards, you chose the first card, and let's say it is 10, heart of 10, and suppose you are replacing it, and then again you choose the second card, then it will be with replacement. And if you are not replacing it, then it is called without replacement. This is the fundamental framework. See, if you understand this framework and how these 4 probabilities are calculated, you will have a very sound foundation to tackle any question related to probability in UPSC. So what I will do now, I will try to help you understand what is the value of value in these 4 cases. So let's take one example. This is one very famous example. One more thing I will suggest you, try to read original text. Do not read too many secondary text. When you read the original books, right, written by real the person, the professor who worked on this concept, if you take example from their books, if you can bring that clarity of thought, then I believe your foundation would be strong. So if I can say, I have taken this example from one such book. What it says, question: for a number of years, the New York State Lottery operated according to the following scheme. What is the scheme? You have 1 to 44, आपके पास 44 numbers हैं, and a person may pick any 6 offer tickets. You have to pick any 6, right? The winning number is then decided by randomly selected the 6 numbers. So let's say I have there 44 numbers, and I chose 6 numbers. Then whether I will get the reward or not, it will depend upon. Then again, the scheme holder will also randomly choose 6 numbers. If my number and those 6 numbers match, then I will get the reward. Otherwise, I will not get reward. But now here comes the another point. Let's suppose I chose 1, 7, 8, 11, 43, and it so happened the scheme the owner of the scheme, he also chose those numbers, but in different order: 1, 8, 7, 43, 11. Then whether I will get reward or not, then it will depend upon whether we are considering ordered case or not, right? So with this question and this understanding, now we will count the final. We will try to count these 4 arrangements, and that should help you understand the framework. What the question says: to be able to calculate the probability of winning, we must first count how many different groups of 6 numbers can be chosen from the 44 numbers. Let's say I take this number. Which number? Without replacement and ordered. What it means? Simply, okay, we are taking with ordered and without replacement. See, you again, here your fundamental theorem of counting will come into place. Let's say there are 44 numbers, right? And you have to choose 6 numbers, right? So first number you can choose in how many ways? 44 ways. Once it has been chosen, you will have 43 ways: 42, 41, 40, and 39, right? So this is the case if you have choosing 6 number out of 44. And now why you will apply fundamental theorem of counting? See, what was your job? Your job was to select 6 numbers. And these are the tasks. These are the 6 different tasks. First task can be done in 44 ways, second in 43, third in 42, and last one 39. So the total job can be done in, again, fundamental theorem of counting. First task, number of ways of first task into multiply the number of ways of second task, like that, and you will multiply 44 into 43 till 49. See, if you are not able to understand, go back to that ABC वाला example. A to B के 3 ways हैं, B to C के 4 ways हैं, तो total A to C के कितने ways हैं? 3 into 4. Same उसी का analogy है ये. Okay, this is fine. So now, and this is without replacement. Why without replacement? See, यदि मैंने 44 select, first task I can done in 44 ways.
but second task I'm taking 43. This means I'm not replacing that number, right? That's why it is without replacement. Now come the question of ordered, whether it is ordered or not. Let's say I take only this product. This is not ordered, because if I'm looking ordered means I'm looking for some particular order. So I have chosen these 6 numbers, and these 6 number can be let's say, just a minute. Oh, just a minute. Ordered. Okay. Yes, this is a kind of a just okay. So that's fine, right? Same thing they have done here. So this is your, see why it is written 44 factorial upon 38 factorial. Simply suppose if you multiply remaining 38 to 1, this full product will be 44 factorial dividing by. So this product is nothing but your 44 factorial upon 38 factorial in the case of without replacement. This is the keyword, right? Without replacement is the keyword. Let's say now come to the second number, and keep on to have that impression how large this number is. Keep on looking at this final digit. Here I see, okay, the final answer is in 10 digit, right? 5008, something like that. Now I take the second scenario when it is ordered with replacement. So what you will say with replacement is every time you will have 40, 40, 44, right? So here, can you see? The work can be done, the first task can be done in 44 ways. Second task again 44 ways, right? 6 tasks can be also done 44 ways. Then you will write 44 to the power 6. So that's what, because you have to select 6 numbers. So this number comes out to be 7256. Now see, just counting the, getting the answer is not important. You have to compare. Okay, when it was with replacement, without replacement, my final answer was this. And when there was, with replacement, my final answer was this. My with replacement answer is more than without replacement. Why? Because at every step, every task, I am having more number of choices. Every time I am having 44 choices. See, some people also try to remember the formula of NPR, NCR. They try to apply directly NPR. Do not do that. See, the moment you start thinking directly through formulas, that means the clarity is not there. First, try to build foundation. Now, suppose you have got this number, right? Then you will think, okay, whether this is equal to my NPR or NCR. That kind of thought process is important. You do not have to apply the formula first and then get the answer. First, have the thinking, have the logic, and then comes the mathematics. So we have covered 2 cases. Now, the third case, unordered, right? Because in the first case, what was happening? We took the case, we took an ordered case. Now we are talking about unordered. Unordered means whether, let's say 1, 2, 3, 1, 2, 3 and 3, 2, 1 means same. So again, what will happen here? Without replacement will be the same. For without replacement, what you will do? You will select again 44 to 39, right? 44 to 39. But the keyword here is unordered. Unordered means ordering does not matter. So those 6 numbers, the 6 numbers which you are selecting, those itself can be arranged in how many ways? 6 that can be arranged in 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, right? So you will divide that and you will see this number. And now try to observe this. Okay, now this has gone very little. Why? Because it has been divided by 6 factorial compared to the first option. Now you will try to think, okay, now this is my, those who I think everybody understands that this is equal to NCR. NCR means out of n things you are selecting R. So this is given by n factorial upon n minus r factorial into r factorial. Here let's say out of 44 you are selecting 6. So what you will get? 44 factorial upon 6 factorial into 38 factorial. Same thing. Now once you have this thought process clear,
that you have to think this way. Now you have to think, okay, this thing is also called NCR. And to share with you one more observation, out of the 4 cases, one more case we will discuss. This case is the most important case. Not only statistics, mathematics, and other aptitude examination. This is the case you have to focus on. Most of the questions in examination, not only examination, even real life, statistician, it is their food, right? They cannot live without NCR, right? So, and please read. I've written the explanation in your free time. I'm expecting that you will go through this one. Now the 4th case, unordered with replacement. Now this is very tricky to count. Just try to first imagine what is happening here with replacement. That means every time you will have 44 option. Out of 44 you have to, what is the question? Out of 44 you have to select 44 tickets, you have to select 6 tickets, and with replacement, that means every time you will have 44 options, but it should be unordered. Now this becomes tricky. You will think, okay, the ordering does not matter, then what would be my answer? See, it's very difficult. If you think, if you forget every formula, it's really very difficult to calculate cases like that. It is very complicated. If let's say anyone who has never studied probability, if you tell that person to count this case, he will be at loss. See, somebody who's reading probability and day in and day out, for them it becomes easy. But if you have to really test whether a question is difficult, give it to somebody who does not have to do anything with this field. So it is difficult. So, but again, there is one method to do that. And what is that method? Okay, some people might think that with replacement case, we remember 44/6. Just now we saw the second case, when there is a replacement, the total cases were 44/6. And here is unordered. So you might like to say that why not divide it by 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. But no, this is wrong. This method is wrong. It is too small. And how you will solve it? That you have to think of imagining that you have to imagine, let's say there are 44 numbers, right? This is 44 numbers. And imagine you have 6 markers, and you have to place those 6 markers in 44 on those 44 numbers. When I do this, do you agree? If I can count? What I'm trying to say, I have 44 numbers, right? 1, 2, 3, 4, like that, 44. And I have 6 markers, and I have to place, right. And if I can count the arrangement of these 44 markers, 6 markers in these 44 numbers, then it is same as counting unordered with replacement. See, you please try to convince yourself why both these cases are same. Why? With replacement, why? Because every time you are having 44 choices. So that covers your with replacement thing, because you are placing 6 markers and every time you are having 44 numbers, right? So that is fine. Unordered, because see, what is the meaning of unordered? Ordered means when the ordering matters. Unordered means, let's say unordered means 1, 2, 3, and if you select 1, 2, 3 and 3, 2, 1, this is same. So simply you are putting 6 markers, right? So whether see, you are only worried about the placing of 6 marker, right? You are not worried about the order. So this is the logic. See, solving this question is fine and bringing this analogy is fine. But try to imagine the person who thought that this case can be counted through this method. Try to imagine his level of thought, how deep he must have thought. So I want aspirant to think in that way. Now the question becomes easy. So what is happening? Let us imagine there are 44 bins. Now out of 40, you can imagine that there are 44 bins, and you are placing those markers here, right?
for this unordered and with replacement case, what you can assume, you have to simply look the arrangement of these markers and the walls of the bin. These are the walls. These are the walls of bins. There, we can also imagine there are 44 bins, right? And we are just simply putting 6 markers. Okay. Now, if you have to see the arrangement, so total 44 bins, how many walls we will have? 45. Because you can count, let's say 2 bins are having 3 walls. So 44 bins will have 45 walls. Let's suppose I take off this wall and this wall. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, right? क्योंकि मुझे तो what I'm interested in counting the arrangement between marker and walls. Suppose first marker I can put here. So this is wall 1, wall 2. Second marker I can put between, let's say 4 and 5. Like that, I will have many arrangements. So what I'm interested in, finding the arrangement between my markers and bin walls. And that is easy to count. So how many objects you will have? 6 markers are there. And you have already taken off 2 walls, right? For 44 bins की कितनी walls थी? 45 walls थी. Okay. आपके 6 markers हैं. Right? आपने 2 walls remove कर दिया. Sorry, 2 walls remove कर दिया. आपके पास total कितने wall बचा? 43 walls and 6 marker. 6 marker. आपको इसका arrangement count करना है. So how many total कितने objects हो गए? 43 plus 6, 49. 49 का arrangement कितना होगा? 49. If there are 49 objects, they can be arranged in 49 factorial ways. Just now हमने देखा ना 6 objects can be arranged in 6 factorial ways. So 49. But how many are identical? These walls, all walls. We are assuming that all walls are identical. See, yes, that is important point. We assume all the walls are identical and all the markers are identical. So walls are how many? 43 factorial and markers are how many? 6 factorial. Right? See, if we assume that the markers are not identical, फिर तो ये हो नहीं सकता. See, what we said, ordered means 3 to 1 is different from 1 to 3. This is ordered. अभी यदि हमको ये वाला केस को अनऑर्डर्ड बनाना है तो यदि मान लो ऐसा कर देते हैं 1 1 1 1 1 1 तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना. तीनों 3 of them are 1 1 1, right? So that is the scenario. So this is your answer. 49 factorial upon 43 factorial into 6 factorial, right? So we have counted all the 4 cases, and you can please go through this PDF, this solution, and please try to remember this matrix before any examination. I am assuming that you will remember this thing. Now you can come. So now your formula thing will come into picture. First case we saw. First case में हमने क्या देखा था? How many ways were there? Without replacement and ordered. We saw 44 into 43 into 39 तक. This thing can be also written at, let's say n is equal to 44. This thing else can be written as 44 into 44 minus 6 factorial. Right? So this is nothing but, can you say this is the same formula? Now you will say, okay, this is my NPR. जो आप पढ़ते हो ना 11-12 में probability, वहाँ पे क्या होता है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बताया जाता है, तो आपका माइंड बराबर यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद द बेसिक्स. बट हियर यू हैव सीन द एग्जांपल, you have connected with the basics. Now you come back to the formula. So now you understand why it is n factorial, why this is n minus r factorial, right? So this is your first case is your NPR. Just a minute. NPR. Fine. Now second, this is well evident. आपके हर बार 44 थे. Total lotteries were 44, and you were choosing 6. So that's why this was 44 by 6. So whenever there is, with replacement and unordered, and this is the largest number of count. You saw सबसे ज़्यादा values किस में आ रही थी? इसी में आ रही थी. So this came out to be 44 power 6. Now this one with replacement and unordered, उसमें हमने क्या किया था? ये जो वैल्यू थी, जो आपके जो फर्स्ट केस में वैल्यू आई थी, उसको 6 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया था. तो हमारी फर्स्ट केस में वैल्यू कितनी आई थी? ये आया था. लेट्स से आई डिवाइड दिस नंबर बाय r फैक्टोरियल. तो व्हाट विल हैपन? n फैक्टोरियल अपॉन n minus r factorial into r factorial. This is nothing but NCR. See, and now this is the most important case. NCR means without replacement and unordered.
This is the most important case in both probability, combinatorics, even statistics. This is most important, right? Now the last case which we saw was difficult to count. So what we did in last case, our answer was how much it was? 49 factorial upon 43 factorial, 6 factorial. You remember how you got 49 factorial? 44 bins were there. They were having 45 walls. You removed 2 walls. You were left with how many walls? 40. You were left with 43 walls. You had 6 marker. So you were looking for the arrangement of 43 walls and 43 identical walls and 6 identical markers. Their arrangement will be 49 factorial, and then you will divide it by the numbers which are repeating. Okay, and walls are 43 and 6 are marker. So that is and you can see this is nothing but equal to same. Let's say 44 plus 6 minus 1 C 6 factorial. If I solve this, what will be my value? This is 46, 50, 49 factorial upon 6 factorial into 49 minus 6, 43 factorial. Right? Do you see? This is the way you have to think for. I'm pretty sure, and I want to assure you, if you will think this way, if you will tune your mind to understand probability and combinatorics, you would be able to tackle any question, whether it is CSAT, management optional statistics. Okay. So these kind of question UPSC is asking. Now I want to, again, as I mentioned that I observed some questions in the last few years from different UPSC questions, UPSC Civil Services only, I'm not talking about other services. This is my view, that question like this will be asked next year in CSAT. This is going to happen. Because this is a logical I'm observing last few words question. So I saw, okay, what happened 22, 21. 22 was, CSAT 22 was a game changer, right? Even in, so now these kind of question might be asked, and this is nothing but what it is saying. Let's say there are 2 events, one and A and B, are statistically independent if probability of A intersection B is equal to probability of A into B. First, you have to understand what is the meaning of independence and mutually exclusive, right? Student इसमें बहुत confused होते हैं. आप एक simple सा example लो, एक coin है, इसके head होता है और tail होता है, right? Now, head and tail are mutually exclusive. Mutually exclusive means उनका कोई intersection नहीं है, right? So probability of A intersection B is equal to 0. क्योंकि head आया तो tail नहीं आएगा, tail आया तो head नहीं आएगा. So they are mutually exclusive. जैसे word बोलता है ना, mutually exclusive. So you understand this meaning, right? Whenever you say probability of A intersection B is equal to 0, that means mutually exclusive. Mutually exclusive, right? Now, okay, intersection B and this thing I think everybody knows, right? This is A, this is B, this area is called intersection. Okay, and the union would be, what would be union? The full circle, right? Let's say this is again B, so this full area would be called, this is A, the full shaded area will be called A union B, and you know the basic formula. What is the basic formula? Probability of A plus probability of B is equal to probability of A intersection B plus probability of A union B, right? This thing you must know. And इसमें क्या है, ऐसी आप सिंपल देखो ना, 2 कॉइन है, ये A है और B है, उसका जो एरिया है, आप इसको सी, यदि आपको ये फॉर्मूले में डाउट है, इसमें कुछ नहीं है, मैं इसको एक एरिया के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ. सब आई एम राइटिंग हियर, मान लो ये A हो गया प्लस B हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, A इंटरसेक्शन B क्या हो गया? दिस एरिया, राइट? सो दिस एरिया प्लस ओवरलैप वाला एरिया क्या हो गया, जो कि दोनों में काउंट हो रहा था. कैन यू सी? तो इसको यानी बोथ एरिया इक्वल, राइट? सो this is the fundamental things you have to remember, and UPSC has many questions from this concept. Now you have understood mutually exclusive. Now you have to understand what is independent. Independent is very, very important. Let's say there is a statistician. Statisticians say that there is no definition of independence other than this. But let's say you have to explain a child what is independence. Again, from the coin,
let's say suppose I toss a coin and I get head. So would I say that head and tail are independent in that particular toss? No. Head and tail are mutually exclusive here. Do not confuse it with independence. They are not. See, head आया है तो इसका मतलब क्या है? Tail नहीं आया है, right? तो इसका मतलब वो dependent है. ठीक, इसमें बहुत लोगों को confusion होता है. If I say within one toss, head आया है तो और head आया तो इसका मतलब tail नहीं आया है. तो head and tail are dependent. तभी तो head है. यदि आपको मालूम पड़ गया कि head आ गया है, तो इसका मतलब आपको पता चल गया है कि tail नहीं आया है. So some people will also write it like this. What they use conditional probability. They say probability of A given B is, probability of A intersection B upon probability of B, right? And if this is equal to, यानी see A and B are independent, तो इसका मतलब B के, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि यदि मान लो B हो गया है, सपोज B is happened, तो what is the probability of happening A? और आपको पता है A and B are independent, तो ये किसके इक्वल होगा? ये probability of A के इक्वल होगा ना, because B के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा. If this is this is the condition of independence, and you also know that probability of A given B is also given by this probability of A intersection B upon this. अब आप इन दोनों को multiply कर दो. So what you will say? Probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B, and this is the condition of independence. Very very important. See, इसको mind में रखो, इससे question आने आना है. This thing you must know. So let's say suppose आपके पास कोई event है A. A का probability दे रखा है let's say 0.6, B का probability दे रखा है 0.5. I will take it 0.4. Okay, B 0.6. इसका मतलब A और B के अलावा, क्योंकि A और B को सम करके 1 आ रहा है ना, उसके अलावा कुछ नहीं है. और ये इंटरसेक्शन पार्ट है लेट्स से 0.1, राइट. आई विल फर्स्ट टेक 0.24. ये इंटरसेक्शन पार्ट यानी दिस शेडेड एरिया. सो यू विल से वेदर A and B are independent. Yes, because probability of A into probability of B is 0.24 and that is equal to the 0.24. So suppose this is 0.2, then they are not they are not independent. So ये चीज आपको पता होना चाहिए. Please know it. And once you know that A and B are independent, then A independent होता है किससे? B complement से भी. B complement का मतलब क्या है? Suppose this is a A, this is B, A B. So B complement का मतलब है B को छोड़ के बाकी सब जो एरिया है, right? So A and B complement will be also independent. A complement and B would also be independent. A complement and B complement would also be independent. ये तीनों चीज होगा if A and B are independent. आप इसको वेरीफाई कर सकते हो. एक मैंने वेरीफाई किया है ऑलरेडी, राइट. ये फॉर एग्जांपल क्या किया हमने यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इसको देखा है, राइट. दिस इज B कॉम्प्लीमेंट. दिस इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B. कैसे आया? वेन डायग्राम बना के देख लेना, क्लैरिटी आ जाएगी. और आपको दे रखा है A और B इंडिपेंडेंट. दिस मीन्स यू कैन राइट P, राइट. यहाँ से कॉमन ले लिया, ये बचा कितना? 1 माइनस PB. और ये 1 माइनस PB को क्या लिख सकते हो? B कॉम्प्लीमेंट. दैट्स वाई यानी इफ A and B आर इंडिपेंडेंट तो A एंड B कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे. सी, ये सब आपके यदि ये जो रिजल्ट्स है ये आपके माइंड में एम्बेडेड है, तो आप एग्जाम में काफी टाइम सेव कर सकते हो. वहाँ पे ना वो सी क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व हो ही जाता है, बट द फाइट इज टू दैट विद इन टाइम एंड लॉजिकली. ओके, now you have understood this thing. Now I want to discuss with you one important question. Before I take this question, I will take a few easy question so that आपका थोड़ा सा रिदम बन जाए. Let's say this question, suppose now you know counting. इस क्वेश्चन में क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 26 था CSET में, SAT में. Using this one, 2 to 3, how many distinct number greater than 30,000 can be formed? Okay, greater than 30,000, right? So first place पे क्या होगा? 3 हो सकता है, क्योंकि so first place पे आपका क्या हो गया? तो आपको कितना डिजिट बनाना है? कितनी डिजिट है? 5 डिजिट है. तो फर्स्ट प्लेस पे क्या हो सकता है? 3 हो सकता है.
कितना डिजिट बचा आपके पास? 4 बचा। सेकंड प्लेस पे कोई भी हो सकता है, राइट। अब आपके 2 सेलेक्ट हो गए, तो थर्ड पे कितना होगा? 3 को होना पड़ेगा, फोर्थ पे 2 को होना पड़ेगा, लास्ट में, राइट। सिंपल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। पहले प्लेस में 3 क्यों हो सकते हैं? क्योंकि 2 को तो ले ही नहीं सकते ना, 2 कैन नॉट बी ऑन द फर्स्ट प्लेस। आप केवल 3 में से ले सकते हो। 3 हो गया। आपने मान लो सपोज करो एक 3 ले लिया है, एक 3 ले लिया है, एक 3 ले लिया है, तो सेकंड प्लेस पे आप कितने ले सकते हो? या तो 2 2 ले लो, 3 3, ये हो गया। अब आपने मान लो एक और 2 ले लिया है, कितने बचे आपके पास? 3 बचे इन तीनों में से, राइट। एक मान लो सपोज करो आपने कुछ एक ले लिया है, 3 ले लिया है, फिर कितने बचे आपके पास? 2 बचे, फिर 1 बचा, तो टोटल कितने वेज हो गए? 4 इंटू 3 इंटू 2, राइट। तो ये टोटल वेज, बट ये आपका 3 का रिपीटिशन है और 3 का 3 टाइम्स है और 2 का भी 2 टाइम्स है, उससे डिवाइड करोगे यू विल गेट 6। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन इफ यू नो काउंटिंग। ये क्वेश्चन देखिए, चेस बोर्ड पे क्या बोला है कि चेस बोर्ड पे इन हाउ मेनी वेज 6 consecutive squares कैन बी चोजन ऑन द डायगोनल। सिंपल क्या है, सी आप मान लो इसमें ना, इससे कभी कभी क्या होता है, नॉट ओनली टैकलिंग दिस क्वेश्चन बट ए मच लार्जर, आपको पैटर्न देखने होते हैं। सपोज कि ये चेस बोर्ड की जगह ऐसा बोला होता 20 इंटू 20 का स्क्वायर, तो आप क्या करते हैं? आप काउंट तो नहीं करोगे वहां पे, तो आप पैटर्न देखो। सपोज करो मेरे पास 3/3 का है और मुझे 2 चूज करने हैं, तो 3/3 के स्क्वायर में भी डायगोनल पे कितने होंगे? 3 स्क्वायर होंगे, राइट, दोनों साइड। यू नो लाइन सही से ड्रॉ नहीं किया बट ये, सो आपको 2 चूज करने हैं। आप तो ये दोनों चूज कर सकते हो, ये दोनों चूज कर सकते हो, या फिर ये चूज कर सकते हो, राइट। आई एम कॉलिंग इट पॉइंट ए बी सी डी, राइट। इन द फर्स्ट केस यू कैन चूज ए सी, सेकंड केस B2। तो 3 में से 2। अब मान लो आपने 4 का ले लिया होता, तो आप देखोगे कि उसमें से आप कितने वेज में चूज कर सके? 3 वेज में चूज कर सकते थे। ये पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आपके 6 उसमें कितने स्क्वायर बनेंगे? 8/8 में 2 डायगोनल बनेंगे, एक डायगोनल 8 का, दूसरा डायगोनल 8 का। पहले डायगोनल में से आपको कितना सेलेक्ट करना है? 8 में से 6 है। सो व्हाट यू विल डू, आप इसको नंबर्स की तरह भी देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने पहले ये 6 सेलेक्ट कर लिए, ये स्क्वायर ही तो सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद फिर आपने ये सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद आपने ये सेलेक्ट कर लिया, तो कितनी वेज हो गए? 3, एक डायगोनल के लिए। सेम वे यू विल डू फॉर द सेकंड डायगोनल, एंड दिस वे you will select 3 plus 3, 6 ways. Okay, see, let us see one more question. This again is a counting method, right? There are 6 persons arranged in a row. Another person has to shake hand with 3 of them so that he should not shake hand with 2 consecutive persons. In how many distinct ways possible this can be done? तो इसमें क्या है? सिंपल आप इसमें काउंटिंग करो। आप क्या करोगे? 6 वेज लिख लो, 1 2 3 4 5 6, राइट। 1 2 3 4 5 6। तो आपने सपोज 1 से स्टार्ट किया, हमेशा पैटर्न से स्टार्ट करो। 1 3 हो सकता है, एक 1 3 एंड 5 हो सकता है, या 1 3 और 6 हो सकता है। तो ये टेकन 1 3 5 1 3 6। उसके अलावा और कोई पेयर हो सकता है? नहीं, क्योंकि 3 सेलेक्ट करना है। अब 2 से स्टार्ट करो, 2 4 हो सकता है, 2 4 6 हो सकता है, राइट। हो गया, ठीक है। अब उसके अलावा देखिए कोई और पैटर्न बचा, फिर आप देखोगे ओके 1 के साथ मेरे एक पैटर्न बन जाएगा। 1 मैं 4 ले सकता हूँ, 1 6 ले सकता हूँ, 1 4 6। सो टोटल यू विल हैव 4 वेज। ओके, सो फिर सिंपल, यानी दिस क्वेश्चन आर सिंपल। नाउ सी दिस क्वेश्चन, व्हाट इट सेज, व्हेन a certain number is multiplied by 7, the product is entirely comprised of only 0 1 1 1. Okay, what is the smallest such number? ये नंबर दिया है। सी आपके पास कुछ जब प्रैक्टिस करते तो कुछ माइंड में स्कीमात बन जाते हैं। लेट्स से 11 is 1 into 11, राइट। 1 1 1, राइट। 37 into 3 कितना होता है? ये हो गया, ओके। देन 1 1 1 1, एक और नंबर लेते हैं, यानी कितना हो जाएगा? 241 into 31 देखिएगा, नहीं 241 इंटू किस नंबर पे आएगा? 241 इंटू कितने पे डिवाइड करने में तो अभी टाइम चला जाएगा। आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू डिवाइड। 271 इंटू 41, नहीं ओके, नहीं ये नहीं, सॉरी, यदि आपके 5 हो तो
आपके यदि 5 हो, ओके आप सॉरी मैंने 4 ले लिया ना, ओके ओके जस्ट अभी कंफ्यूज हो गया, क्या करना था मैं 1 2 3 4, इसको आप लिख सकते हो 11 into 101, 11 into 101, 1 2 3 4 5, इसको आप लिख सकते हो 271 into 41. ना आप ये बोलोगे कि ये नहीं आपके माइंड में कैसे आएगा, सी इट्स नॉट इतना ये नहीं आ सकता माइंड में नेचुरली, बट हाँ इतना जरूर पता होना चाहिए कि 11 जो 1 डिजिट के होते हैं उनका प्रोडक्ट प्राइम नंबर्स होता है. दिस थिंग यू मस्ट नो. आई अंडरस्टैंड कि इवन आई आफ्टर सो मच प्रैक्टिस आई कुड नॉट रिकॉल व्हाट इज 1 का प्रोडक्ट, और वो माइंड में रहता भी नहीं है. बट हाँ ये जरूर पता होना चाहिए कि ऑल दिस प्रोडक्ट्स आर प्राइम नंबर. सी ऑल दिस आर प्राइम. 11 1 इज नॉट प्राइम. 37 3 11 101, right? These are prime numbers. So the product which is going to be there is going to be prime number, right? So 1 1 1 6 times, it will be 6 times, and you know what they are asking, if this number is which 7 is multiplied one of these numbers, which of those numbers? So आप ये simply क्या करोगे, आप देखोगे कि यानी या तो ये नंबर, अब इसका क्या प्रोडक्ट आएगा, इसी प्रोडक्ट तो इसका है 11 into 13 into 7, 7 into 11 into 13 into 37, 3 into 3, राइट? ये प्रोडक्ट है. अब आपको सी इट इज नॉट नेसेसरी यू नो ऑल दिस प्रोडक्ट, लेकिन हाँ आपको ये इंट्यूशन होना चाहिए कि ये नंबर जो नंबर ऑल वंस इट विल कंप्राइज ऑफ ओनली प्राइम फैक्टर्स. सो 7 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली इनमें से नंबर चूज करोगे जो कि 11 या 13 से किसी से भी डिवाइड हो रहा हो. अब आप बोलोगे कि प्राइम नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, यस आई अंडरस्टैंड, बट वो एक बेसिक इंट्यूशन होता है कि आप सोचोगे ओके 11 से या 13 से या किसी से डिवाइड होना चाहिए, तो देन ऑटोमेटिकली सी यही क्रक्स है, ये सोचना कि which of these numbers will be divided by 11 and 13, and this should come in your mind in examination in 20 seconds. If you are taking more than 20 seconds, ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करो, हाँ राइट, क्योंकि सारे नंबर्स को चेक करने लगे तो इट विल टेक हेल लॉट ऑफ टाइम. या आप कोई कहता है कि ओके आई विल डिवाइड 6 times 1 by 1, इसमें बहुत टाइम चला जाएगा. नो नो, इवन इफ यू सॉल्व इट, दैट इज नॉट द वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन. डोंट डू दैट. ट्राई टू बिल्ड कंसेप्ट. So once you know, okay, the 1116 times is a product of prime numbers, you will try to identify which number is divided by 11. So you will immediately say 15873, right? So now I want to discuss 2 difficult questions, right? I said difficult question, and my intuition is that, my understanding is that if you can understand these 2 questions, forget, if I can say in any optional subject of UPSC is asking, including CSAT, if you can develop this kind of understanding, you will be able to tackle any question. Statistics optional, management optional, CSAT, right, mathematics. So we will discuss these 2 questions, and this involves concepts of Bayes Theorem. And what is Bayes Theorem? Bayes Theorem, Bayes was a wonderful mathematician. He gives Bayes Theorem. What it simply says, I will tell you what it simply says. It says this: that probability of A given B. अभी हमने देखा था ना, A given B क्या होता है? Probability of A intersection B upon and probability of B. And इसको interpretation किसी को problem, इसका simple meaning क्या है? What is the probability of happening A if the B has already happened? This is given by probability of A intersection B upon probability of B. So what Bayes said, see, he gave just a minute. Okay, no problem. I will use this. Just a minute. I will use this one. What he said, let me write. Probability of A given B into probability of B is equal to probability of A intersection B. Oh, sorry. B into probability of A. Wonderful formula, right? I have not written, I have written it a tapering way. But if you understand, see this formula, what I have to say,
the simplest things in mathematics or statistics are the most wonderful thing. This is very simple formula. It has but lot of deep thinking, and we will use this formula to understand this question. Right? Please read this question. What it says: there are three prisoners. Three prisoners A, B, and C are on death row. They are about to die. So, when somebody is about to die, you can see how much probability they are going to apply. The governor decides to pardon, this is pardon, one of the three and chooses at random the prisoner to be pardoned. Now, see, three people are there, one has to be pardoned and two are to be executed, and he chooses at random. He has no emotions or, he is unbiased person. So, what then he informed the warden. Warden means let's say governor is understand warden, right? Who will look after of his choices. He must have chosen somebody randomly, and then he said maybe somebody who is to be pardoned, but request that the name be kept secret for a few days, so that prisoner those who are about to die. Have you read that essay by George Orwell? You read, he had written an essay on on a death of a prisoner. So what he said, a person, he was about to be executed. He was against, this capital punishment. What he observed, that person was about to be executed and he was being taken to the gallows. So he observed a mud block came, and he avoided that so that he do not cross that mud. So he made this point. Let's say the person who is going to be executed, he has consciousness not to trample upon that mud. So why to execute somebody? But anyway, those are different views. Here we are taking probability question. Here there is no no sentiments involved. The next day, A tries to get the warden. Now see, he is one of the prisoner, right? A tries to get the warden to tell him who had been pardoned. कौन किसको pardon किया? Because he's in hysteria. The warden refuses. A then, see, now A is asking, warden will not tell because the governor told him, not to share anything. But then A asks which of the B or C will be executed. The warden thinks for a while, then tells A that B is to be executed. This is executed. Okay. Now here comes the, see, you have to think on this question. What they are saying, you understood, right? So what A said, okay, warden was not telling whether who will be pardoned. So A asked, okay, B और C में से कौन execute होगा? तो warden बोलता है कि B execute हो जाएगा. So now what is the question? A को लगता है कि मुझे information मिल गया है. What A will say? When just a minute. Okay, here. Okay, so I think here. Okay, now warden क्या reasoning दे रहा है? Warden की reasoning is that each person, warden has not disregarded the order of governor, because warden क्या सोच रहा है कि मैंने A को बता के कि B और C में से कौन एग्जीक्यूट होगा, उसको A को कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है. क्यों? क्योंकि उसको पता था कि every prisoner, because warden thought every prisoner has 1/3 chance of being pardoned, right? Clearly either of B or C must be executed, right? क्योंकि उसे पता है कि 3 prisoner है, उसमें से 2 तो एग्जीक्यूट होने ही होने हैं, तो या तो B या C में से कोई एक तो एग्जीक्यूट हो गई होगा. Okay, so I have given A no information. Okay, see, again think what warden is saying कि every prisoner का pardon होने का चांस कितना है? 1/3 चांस है. और A ने उससे क्या पूछा कि B और C में से कौन सा एग्जीक्यूट होगा, तो उसने बता दिया B एग्जीक्यूट होगा. लेकिन वार्डन क्या सोच रहा है कि वार्डन क्या बोल रहा है कि B और C में तो एक एग्जीक्यूट होना ही होना था, वो तो सबको दुनिया को पता था, तो मैंने उसको बता दिया, तो उसको ऐसा क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया. सो वार्डन से I have given A no information about whether A will be pardoned or not. But what A is thinking, A क्या सोच रहा है कि A को B और C में से एक पक्का पार्डन हो रहा है, सॉरी एक पक्का एग्जीक्यूट हो रहा है. सो अब या तो मैं जो दूसरा एग्जीक्यूट होने वाला है, या तो मैं एग्जीक्यूट होगा या C एग्जीक्यूट होगा.
तो ए क्या सोच रहे हैं कि मेरी जो पार्डन होने की जो प्रोबेबिलिटी है, राइट, वो 1/2 हो गई है. नाउ हियर कम्स दैट, दिस इज जस्ट लिसन टू माय प्रीवियस स्टेटमेंट अगेन. ए क्या सोच रहा है कि पहले क्या था कि हर एक का पार्डन होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 था. नाउ ए इज थिंकिंग कि अब ए और सी में से केवल एक ही एग्जीक्यूट होगा. तो क्योंकि बी को उसको पता है ना बी एग्जीक्यूट होने वाला है, बिकॉज वार्डन टोल्ड हिम दिस इन्फॉर्मेशन. सो ए इज थिंकिंग दैट माय प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग पार्डन हैज इंक्रीज टू 1/2. नाउ आई एम मोर सेफ. तो आपको ये बताना है कि विच थिंकिंग इज रॉन्ग, किसका थिंकिंग सही है और किसका थिंकिंग प्रॉब्लम है. यदि आप ये समझ जाओ, ये क्वेश्चन लेंदी लग रहा है लेकिन इसमें थॉट प्रोसेस है ना बहुत छोटी और बहुत डीप है. इफ यू अंडरस्टैंड दैट थॉट प्रोसेस then you must congratulate yourself. Now we will go into the solution. इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जो थॉट प्रोसेस है वो वार्डन की ठीक है, एक ही गलत है, जबकि कॉमन सेंस को लगता है कि एक ठीक है वार्डन गलत है. नो नो नो, probabilities are different from, probabilities are different from common sense. Mathematics is different from common sense. कॉमन सेंस कभी कभी रॉन्ग हो सकता है, लेकिन जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल का जो रिगर है उसमें यानी उसमें गलती की चांसेस कम होती है. ओके, सो अब आप इसको यहां पे देखो. व्हाट इज हैपनिंग कैन बी समराइज इन दिस टेबल. वार्डन ने क्या बताया ए को? वार्डन टेल्स ए बी, वार्डन इन्हें वार्डन से क्वेश्चन पूछा, यानी बी और सी में से कौन सा एग्जीक्यूट हो सकता है. मान लो वार्डन कुछ भी बता सकता है. बी ने बोला कि इफ बी डाई हो रहा है तो क्या कौन कौन बच सकता है? या तो ए बच सकता है या सी बच सकता है इस केसेस में, इफ बी डाइज, राइट. अब सपोज दूसरा ऑप्शन क्या था वार्डन? क्या वार्डन बोल सकता था सी इज डाइंग. सो इन दैट केस इफ सी इज डाइंग देन ए बच सकता है या बी बच सकता है. ओके, तो ये दो ऑप्शन है, बिकॉज क्वेश्चन बिफोर वार्डन बाय ए वाज हु अमंग द बी और सी विल बी एग्जीक्यूटेड. तो वार्डन के पास ये 4 चॉइसेस थे. सो अब आप यहां पे देखो, ये क्रक्स है. व्हाट इज द क्रक्स? जस्ट अ मिनट. जो बी डाइज है, ओके, ये जो ए के जो ये जो चीज है, मान लो बी डाई हो रहा है, ओके, वार्डन ने बोलता है कि वार्डन सेइंग दैट बी डाइज एंड सी डाइज, then in both cases A will be pardoned, right? There are chances, A might be, suppose B dies, then A might be pardoned here, and B dies or C might be pardoned. So now you have to, this is a very very important point of this question. These have equal probabilities. Do you understand why? Just think on, these have equal probabilities, with each with equal probabilities. यदि बी डाई कर रहा है तब भी ए बच सकता है, और सी डाई कर रहा है तब भी ए बच सकता है. ओके, सो नाउ एंड दिस विल बी दो, यानी ए के जो हमने क्या सोचा था, ए की जो पार्डन होने की जो प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग में 1/3 है, वो दो केसेस में डिवाइड है. किसमें? जब वार्डन किस तरह आंसर करता है, बी डाइज तब भी ए बच सकता है, सी डाइज तब भी ए बच सकता है. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट. इफ यू अंडरस्टैंड दिस थॉट, फिर आप समझ जाओगे कि ओके व्हाई समटाइम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी माइट बी स्लिपरी. ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मींस सिंपली, I have not used the word condition so far, but this is condition only. When I say probability of a condition B, this backslash is called the condition. Now this is fine. Now in this question what we are doing, just a minute, one more thing. एक मिनट, इसमें लिखा नहीं है, बट आई हैव टू टेल यू सम नोटेशन. व्हाट इज द नोटेशन? द नोटेशन इज दिस: probability of A, now we are going to solve this question. Probability of A is equal to probability of B is equal to probability of C is equal to 1/3. And what ABC means, A means the event that A has been pardoned, B has been pardoned and C has been pardoned. तो इसकी सबकी probability 1/3 है, ये आपको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं. हमने एक नए इवेंट डिफाइन किया W. ये W क्या डिफाइन कर रहा है कि वार्डन टेल्स B डाइज, क्योंकि इन्हें क्वेश्चन पूछा था ना वार्डन से, हु अमंग द B और C विल डाई, तो उसको हम W डिफाइन कर रहे हैं. तो व्हाट द वार्डन इज सेइंग टू B, वार्डन टेल्स B डाइज. So जब वार्डन इज टेलिंग B डाइज, so how
and this is equal to warden says B dies and A pardoned. Okay, see, यदि B die हो रहा है तो क्या क्या हो सकता है? Now see, now this is again important. Now this W is equal to this, but यदि B die हो रहा है तो आपके क्या क्या केस बन सकते हैं? B die हो रहा है तो A पार्डन हो सकता है, और B die हो रहा है तो C पार्डन हो सकता है, या B die हो रहा है तो B पार्डन हो सकता है. ये तो थर्ड वाला केस तो कभी होगा नहीं, क्योंकि यदि वार्डन बोल रहा है B die हो रहा है, B पार्डन हो सकता है, इसका मतलब वार्डन झूठ बोल रहा है. बट वार्डन himself was assuming that he is not telling a lie, but what he assumed that he is not giving any additional information to A. So the third case is 0, right? Warden says B dies and B part. So इसकी probability is 0. इसमें कोई doubt नहीं है. Now come to the first case. Okay, now come to the second case. Warden says B dies and C pardons. Now you come to this table. Can you see here? B dies. Warden के क्या option थे? यानी चारों, या तो B Warden could have said B dies or C dies. When say Warden says B dies, तो इसमें C के कितने केसेस बनने हैं? एक केस बनना है, उसकी probability क्या है? 1/3 है, because you know this probability is also 1/3, this probability is also 1/3, and this probability is also 1/3. Okay, total probability is so what will happen in the second case? Warden says B dies and C pardon, this will be 1/3. Now come to the second case. Warden says B dies and A pardon. Here is the crux. See, यहीं पे crux है. See, A pardon दो केसेस में, दो तरीके से पार्डन हो सकता है. वार्डन ने यदि मान लो B को बोला होता है B dies, तब भी A पार्डन हो सकता है, और C dies तब भी A पार्डन हो सकता है. But warden has said only B dies, right? So you will take not 1/3, you will take 1/6. This is important. Think about it. Why 1/6? So I'm assuming that I've given you enough explanation. You will think. So when you say that this is 1/2, and try to think what this 1/2 means. Warden says P. What 1/2 is? 1/2 is nothing but the PW, and this is equal to P. Warden says B dies. That is equal to 1/2. Why? Because warden के दो ही ऑप्शन थे, B और C. उसमें से B और C में से एक को तो डाई होना ही है, तो वो हाफ हो गया. ठीक है. Then अब क्या लाओगे? अब ये सिंपली यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला जो हमने देखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन B इज गिवन बाय, आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, राइट? अब यहाँ पे सिंपल लगा दोगे A कंडीशन W, ये किसकी? A इंटरसेक्शन W अपॉन राइट. A प्रोबेबिलिटी ऑफ W कितना है हमारा? हाफ है, अभी हमने कैलकुलेट किया, राइट? दिस इज इक्वल टू डिनोमिनेटर हाफ हो गया, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन W यानी दैट इज A. हाँ, व्हाट इट मीन्स, A पार्डन हुआ है और B ने क्या बोला है कि B डाइज, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अभी हमने देखा कितना. सी, B ने बोला है कि B डाइज और A पार्डन हुआ है, दिस मीन फर्स्ट वाला केस. इसकी दिस केस, राइट? दिस केस इज नथिंग बट 1/6. अभी हमने देखा, राइट, टेबल से. So this probability will be equal to 1/6 upon this answer will be 1/6 upon 1/2, right? So this will be again how much? 1/3. आंसर कितना है? तो इसका मतलब probability of A का pardon होने का, see what this statement is, probability of A being pardoned given that warden has told him that B being executed, ये अभी भी 1/3 रही. तो इसका मतलब इसका मीनिंग क्या है कि वार्डन ने उसको जो इन्फॉर्मेशन दिया कि वेदर वी विल बी पार्डन, वी विल बी एग्जीक्यूटेड, उससे उसको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A being pardoned remains 1/3, एंड दिस इज करेक्ट. सी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी ये बताता है. ओके, दिस इज करेक्ट. अब आपका जो सेकंड ऑप्शन है, जो आपकी जो A की रीजनिंग है, उसके हिसाब से भी कैलकुलेशन करना है, एंड यू विल से दैट व्हाई A का, सी, A को क्या लगा था कि B is already being executed. So अब A और C में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा, तो इसका मतलब यानी कोई एक एग्जीक्यूट होगा, दूसरा बचेगा. दैट मीन्स मेरी पार्डन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ हो गई है. तो उसको क्या लगा था कि मेरी पार्डन होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 से 1/2 हो गई है. बट दिस रीजनिंग इज रॉन्ग, दैट वी विल सी हियर. A का क्या रीजनिंग है? A given that B will be executed, then either A or C will be pardoned. My chance of being pardoned has risen to half. This is what A thought. But
जस्ट ए मिनट. ओके, यहाँ पे देखिए एक्चुअली पेज का अरेंजमेंट थोड़ा सा, एक पेज थोड़ा सा ना अरेंजमेंट गड़बड़ हो गया है, नो प्रॉब्लम. हाउएवर ए फॉल्सली इंटरप्रेट्स द इवेंट W. जो इवेंट W क्या है, दैट वार्डन ने उसको बताया कि वी विल बी एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट, इज इक्वल टू द इवेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड कैलकुलेट. सी यहाँ पे है, यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको आप कैलकुलेट करोगे, राइट. तो आप सिंपल फॉर्मूला तो लगा ही लोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, राइट. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट आप क्या है 2/3 ले रहे हो, क्यों? तो यही प्रॉब्लम है. यहीं पे जो एक का जो थिंकिंग है, his thinking went wrong. Why? Because we assume that A falsely interpret the W. You know, W का जो W क्या था, that B is being executed equal to the event B complement. See, उसने क्या यानी क्या कर लिया, राइट. सी एक्चुअली इसको ऐसे लिखना चाहिए था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए W, राइट. नाउ W को उसने क्या इंटरप्रेट कर लिया, B कॉम्प्लीमेंट. एंड अभी हमने देखा था W की प्रोबेबिलिटी कितना आया था ऊपर वाले केस में, हाफ. यहाँ पे उसने क्या अज्यूम कर लिया, 2/3, क्योंकि B के पार्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, तो B कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, राइट. सी कॉम्प्लीमेंट कैसे दिया जाता है, कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या हो 1/3, तो ये 2/3 हो गया. ओके, तो यहाँ पे थॉट प्रोसेस गड़बड़ है एक ही, कि यू कैन नॉट टेक यू नो कि W is equal to B complement. Why you cannot take? Again, I will take you to this thing. Again, see, the crux of this question is in this. Because see, A दो केसेस में पार्डन हो सकता है. When warden B dies और C dies, लेकिन A ने क्या assume किया कि B die हो रहा है, then my probability of see, A इसको भूल ही गया कि C के डाई होने पे भी मैं पार्डन हो सकता था, उसने वो चीज कंसिडर किया ही नहीं. So that's why to take PW, you know, PW is equal to 2/3 is wrong. He must have taken half. Okay. अब मान लीजिए आपने कहाँ गया, just a minute, कहाँ थे हम लोग, हाँ, वार्डन रीजनिंग. ओके, ये हो गया, वार्डन रीजनिंग हो गया. राइट है दिस वन. ओके, सो ये 2/3 ले लिया. ओके, एंड देन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट BC, राइट. एंड सी इसको आप यानी BC क्या है, W है ना, तो आप इसको ऐसे लिखते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W, राइट. इसको इसने क्या अज्यूम किया 1/3. ठीक, उस एक हिसाब से तो सही लग रहा है. एक को क्या लग रहा है कि ओके यानी बी सी ए ने 1/3 यहाँ पे क्यों लिया है, आप इसको सोचो. वो आप इस तरह सोचो, ये मान लो A है, राइट, इसकी पार्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और B कॉम्प्लीमेंट, राइट. जहाँ इसको यू नो वार्डन ने बताया कि यू नो आपका B is being executed. So what he has assumed that this W is equal to B complement. W is equal to B complement. See, ऊपर आपका न्यूमेटर जो है ना, न्यूमेटर की जो वैल्यू BC जो B कॉम्प्लीमेंट जो लिखा है, वो भी सिंपली W के रिप्लेसमेंट में लिखा है, और वहां भी गलती है, राइट. एंड व्हेन यू सॉल्व these two equation, you get 1/2. So that's what A thought. Now my probability of being pardoned, given that warden has given that information and he assumed that that information is equal to B complement, it rises to half. No, that is incorrect. So we invested some time, but try to think, try to expose yourself to such questions. I understand these are difficult questions, but if you can tackle such questions, suppose at least if you want, you can skip this question, but do not skip other question which I have mentioned. So now we will take one more difficult question. This is the last question of today's lecture,
and this is a dice probability. Before I read this question, see what this question is about. Its question is very simple. Let's say there is a die, right? You know there are 6 faces, and you are looking for the probability of at least 1 6 in 4 rolls. Let's say, suppose we are finding the probability of obtaining at least 1 6 in 4 rolls of a fair die. And you know die what is, you know, simple 6 faces, 1 2 6 उस पे इम्प्रिंट होता है. आपको आपने 4 बार रोल किया, तो आप जानते हो सी हर बार आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हर एक नंबर के आने की 1/6 होती है. आप क्या कर रहे हो, 4 टाइम्स रोल कर रहे हो, 1 2 3 4. आप क्या देख रहे हो कि 4 टाइम्स में से एटलीस्ट 1 6 आ जाए. ठीक है, एक तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया. फिर इसका वैल्यू निकालोगे, वो ठीक है. नाउ सपोज करो आपको एक और एक्सपेरिमेंट दे दिया जाए, राइट? व्हाट दैट एक्सपेरिमेंट इज, लेट्स से यू हैव टू डाइज एंड यू आर रोलिंग देम साइमल्टेनियसली. 2 डाई हैं, उनको आप साइमल्टेनियसली रोल कर रहे हो, राइट? और आपको देखना है कि यू आर लुकिंग फॉर द प्रोबेबिलिटी दैट एक साथ at least one time एक साथ 2 6 आ जाए. See, now you have two die, right? Not one. फर्स्ट केस में क्या था, 1 थे. अब आपके पास 2 डाई है, आप उनको साइमल्टेनियसली रोल कर रहे हो. कितने टाइम रोल कर रहे हो, 24 टाइम्स, नॉट 6 टाइम्स. एंड यू आर लुकिंग फॉर प्रोबेबिलिटी कि एक साथ 2 6 आ जाए फेस पे. तो आपको सोचना है कि पहले केस में प्रोबेबिलिटी ज्यादा था, इस केस में ज्यादा है, कि वेदर इट इज सेम. Do not go into mathematics. Just think like a normal person कि okay, first time I rolled a die, उसमें आपका out of 6, in 4 chances I'm looking for at least 1 6. Second experiment में क्या कर रहा हूँ, I'm rolling it 2 dice 24 times. Why 24 times? Because see, आप क्या लिख रहे हो, आप what you are looking for, 2 simultaneous 6, but and on every die have 6 faces. So आप उसको कितने रोल कर रहे हो, 24 टाइम्स, राइट? हर फेस को 4 टाइम दे रहे हो, तो 24 टाइम्स रोल किया. और यू आर लुकिंग फॉर प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट आपका 1 टाइम 2 फेसेस पे 6 आ जाए. सो व्हाई दिस क्वेश्चन इज फेमस? सी, दिस इज अ वेरी फेमस प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन इन सॉल्व्ड बाय पास्कल वाज अ मैथमेटिशियन. एंड सी व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस, जो आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, उसी में से कोई थॉट पिक करता है यूपीएससी और उसको डिफरेंट क्वेश्चन पेपर पे डालता है. बिकॉज सी दिस क्वेश्चन पेपर आर सेड बाय वेरी वेल एजुकेटेड, वेल रेड प्रोफेसर्स. तो उन्होंने लाइफ की लर्निंग होती है, उन्होंने बहुत से, तो वहां से वो पिक करते हैं और वो आपकी उसको टेस्ट करते हैं. मे बी once you after maybe 8-10 years when you will go through these works, you will understand what what thought I'm trying to convey. But be assured, this is the way they think and this is the way they set paper. So now given this, एक तरीका है, तो इसमें एक तरीका है, आप बाइनोमियल भी लगा सकते हो. बाइनोमियल का कंसेप्ट क्या है, इसको बाइनोमियल से भी सॉल्व करेंगे, बिना बाइनोमियल के भी, सिंपल प्रोबेबिलिटी से. बाइनोमियल का कंसेप्ट क्या है, व्हाट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, सपोज देयर आर n ट्रायल्स, राइट? n ट्रायल्स एंड यू आर लुकिंग फॉर n. मान लीजिए आपने n ट्रायल्स का मतलब आपने कोई कॉइन है, उसको 10 टाइम्स, n मान लीजिए 10 टाइम टॉस किया, उसमें से आप देख रहे हो कि मेरे 5 टाइम्स हेड आ जाए. यानी हर कॉइन में क्या होगा, एक बार हेड या टेल आ सकता है, राइट? यहाँ पे हेड टेल आ सकता है, राइट? यहाँ पे टेल आ सकता है, यहाँ पे हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, टेल हेड. ओके, 3 6 7 8 9 10, राइट? सो मान लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5, इसको भी हेड बना देता है, राइट? तो आपने 10 में से 6 बार देख रहे हो, तो ये इसके नहीं बहुत फर्दर अरेंजमेंट हो सकते हैं. तो वो फॉर्मूला क्या होता है, अगेन आई कैन नॉट गो इनटू द थ्योरी हियर कि क्या थ्योरी होती है, लेकिन हाँ, जिनको बाइनोमियल से समझना है वो इस तरह समझें कि इसका फॉर्मूला होता है n ट्रायल में से जितना आप सक्सेस देख रहे हो, मान लीजिए यू आर लुकिंग फॉर आर सक्सेस, राइट? और उस पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है लेट्स से p, राइट? तो और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, n minus 1 minus p n minus r. See, जिनको ये नहीं समझ में आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आई एम अज्यूमिंग कि those who are engineers or some have foundation mathematics, they will understand कि out of n are successes and that formula is given by this binomial. You can solve it by binomial or you can also solve it without binomial. तो पहले हम कैसे करते हैं, binomial से solve करते हैं. What you are looking for, out of 4 rolls, you are looking for 4 rolls, at least 1 6 probability of
यानी आपका यानी व्हाट इज योर व्हाट यू हैव टू लुक फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ you know at least one, right? This probability you are looking for, and you know everyone knows this is equal to, this is given by probability of x is equal to 0, right? So ये मान लीजिए आपने आप यानी एटलीस्ट वन का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, तो उसमें से आप कौन सा केस माइनस कर दो, 0 वाला माइनस कर दो, तो आपके n क्या हो गया यहाँ पे, आप कितनी बार रोल कर रहे हो, 4 टाइम्स, राइट? यू आर रोलिंग फॉर 4 टाइम्स, और प्रोबेबिलिटी क्या है हर बार, हर एक फेज की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, राइट? सो यू आर लुकिंग फॉर एटलीस्ट 1/6। मैंने क्या लिखा था, हाँ ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 - x0। ओके, तो उस पे हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है, 1 - x इज इक्वल टू 0 का फॉर्मूला क्या होगा, अगेन 4 में से आप क्या क्या देख रहे हो, एट 0, राइट? 4 आपने वर्ड टॉस किया, 0 चाहिए, हर की प्रोबेबिलिटी क्या है फेस की, 1/6, उसकी पावर r क्या है 0, और रिमेनिंग क्या होगी, 1 - p कितना होगा, 5/6, 4 - 0, राइट? तो दिस फॉर्मूला यू विल राइट, और फिर आपका ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करके सी आप बिना बाइनोमियल के भी डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच सकते थे, सिंपल, यू नो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एस्पिरेंट जो डू नॉट हैव फाउंडेशन इन मैथमेटिक्स। व्हाट यू आर सेइंग कि आपने 4 बार रोल किया, आपको एटलीस्ट एक बार 6 आना चाहिए। आप इसको उल्टा सोचो, आप क्या सोचो, आपने 4 बार रोल किया और एक बार भी 6 ना आए, एक बार भी 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नहीं 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, और एक बार 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सॉरी 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 1/6, दैट इज इक्वल टू 5/6, और इसको आपने कितनी बार किया है, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स का मतलब यानी 5/6 टू द पावर 4, राइट? तो ये 5/6 टू द पावर 4 will give you what, 5/6 to the power 4 will give you that you roll the die 4 times and there is not 6 in any of the cases। यदि उस प्रोबेबिलिटी का 1 से माइनस कर दो तो क्या केस मिल जाएगा कि एटलीस्ट 1 6 आया है। तो ये यानी दिस इज फॉर दोज स्टूडेंट who do not have foundation in binomial and knowledge, and you can think it directly on the, see question lengthy लग रहा है लेकिन है बहुत सिंपल। आपका क्या क्वेश्चन था, सिंपल, यानी आपको क्या प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी थी, 4 बार रोल किया है डाई को, एटलीस्ट 1/6 आ जाए, तो सिंपली आप एक स्टेप में लिख सकते थे, दिस इज इक्वल टू 0.518। नाउ सी ये 50% से ज्यादा है, यदि मान लीजिए कोई गैम्बलिंग कर रहा है तो वो इस पे लगाएगा, यानी बैट करेगा तो उसको मे बी आफ्टर 500-600 ट्रायल्स उसको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। Now come to the second question, second case. Now what you are doing in the second case, you are rolling it 24 times and you are looking for 2 6s at the one time. So यानी 1/6 आने का चांस कितना है, 1/6, दूसरे फेज पे आने का चांस कितना होगा, 1/6, तो you will write it 1/36। क्यों, अगेन आप फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग लगाओ, आपका टास्क क्या, टोटल जॉब क्या है, 2 फेसेज है, दोनों पे 6 आना है, एक फेज पे आने का चांस कितना है, 1/6, दूसरे पे 1/6, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो क्या हो गया, 1/36 हो गया। तो आपका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/36 हो गया। कितने ट्रायल हो रहे हैं, 24 ट्रायल हो रहे हैं। आप बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हो, अगेन यूजिंग द सेम कंसेप्ट कि व्हाट यू विल लुक फॉर, प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन 0, राइट, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 0, राइट, देन यू विल अप्लाई इट हियर। ये 24 है, 24C0, इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। जिनको नहीं आता बाइनोमियल को सिंपल यहाँ से सोचेंगे, कैसे तरह सोचेंगे कि आपको हर एक का प्रोबेबिलिटी कितना है, यानी सी यानी प्रोबेबिलिटी कितना है, 2 फेसेस के आने का, 6 1/6 इंटू 1/6, राइट, दैट इज इक्वल टू 1/36। ये है 2 6 आने का प्रोबेबिलिटी, नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 माइनस दिस, राइट, दैट विल बी 1 माइनस 1/36, दैट विल बी 35/36। ये किसका प्रोबेबिलिटी है कि आपका क्या नहीं आया, यू गॉट, यानी दोनों फेसेस पे 6 नहीं आया है, और ये हाउ मेनी टाइम्स यू आर डूइंग इट, 24 टाइम्स। आप 24 समझ रहे हो, 24 व्हाई वी टुक 24, क्योंकि आपका ये केस बढ़ गया है। पहले केस में आप 4 रोल कर रहे थे लेकिन एक डाई थी, और हर एक डाई पे 6 फेसेस होते हैं, इसलिए उसको 24 बना रहे हैं, क्योंकि नाउ यू आर लुकिंग फॉर 2 फेसेस with 6 number, so you will do 36 की पावर 24, and
एंड ये कौन सा केस होगा? लेट्स से दिस थिंग, दिस नंबर विल गिव यू कि आपका द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो probability of having no, not having probability of having no to 6 simultaneously in 24 trials. Okay, ये है. और आपको क्या चाहिए? Probability of having at least 1, तो उसको 1 से माइनस कर दोगे, then you will find. See why this question is important. आप देख रहे हो कितना कम डिफरेंस है. इसकी probability is less than 50%, उसका probability is more than 50%. But why this question is important? There was a gambler, right? This is a story, right? What was the name? See, आदमी की जब need होती है ना, when the humans have necessity is the mother of all invention. So this was a famous gambler, and I don't remember the name. D something, gambler D Mare, right? D Mare. He was putting bet on these two cases. So originally he thought both are same. But in the second case, he was losing money because it is less than 50%. In the first case, he was getting money, earning money, because that is more than 50%. So then he became, little bit skeptical. Then he asked Pascal, famous mathematician. You must have read Pascal triangle. Pascal triangle पे question आएगा, यानी कहीं ना कहीं, in CSET management option, right? So that thing is going to happen, and then Pascal calculated this. And he found, he solved this, gambler's doubts. I sincerely hope you enjoyed this lecture, and more than that, I hope that you will try to, go through this PDF, solve difficult questions, solve previous questions. If you have any doubt, please comment right in the comment section. Thank you very much.